technical and derivative outlook. In yesterday's trading session, if you see the yesterday's trading session was a more of a lackluster trading session. Index majorly considered in the range of a narrow range of 100 odd points. And index was managing to hold near about 18,600 levels and the low of 18,550 odd levels. So if you see the post a gap up opening, index is consolidating a narrow range and cooling off a bit, which is a healthy sign for index for an up move to go ahead. And now if we see the supports are out, we can see a short support place here, 18,400 odd levels and the resistance towards 18,700. Once 18,700 is cleared out, we can see the fresh hike sooner or later. So coming to the sectorial front, banking and cement space were trading in yesterday on the positive side, especially in the cement space. And on the negative side, if we see metals and chemical were seeing profit booking and automobile were too somewhat in the private in the two-wheeler space. There was a minor profit booking in the index. Now, coming to the Bank Nifty front, Bank Nifty also yesterday raised a fresh high of close to 44,500 odd levels, and it closed near a 124 points higher. So on the stock specific front, if you see yesterday, IDFC Bank, BNB Bank, and Bandhan Bank were the gainers, where EU Bank after a sharp run up was seeing a minor profit booking in the index. So if you see a certain bit in stocks are trying to move the Bank Nifty higher, one day the private leaders are moving, secondly the small leaders are taking the charge. So if we see on the derivatives front, if we see yesterday for the index, Bank Nifty, Bank Nifty index PCR saw an uptick to the close to 1.22 as compared to the previous closing of 1.11. And on the futures front, if you see there was a long build up in the index to the tune of 2.43 percentage. Similarly, in the Nifty PCR saw an also long build up tune of 4 odd percentage, that is 0.43 million shares, and the PCR was mildly flat at 1.33 levels. So PCR was flat as 1.33 levels. Now coming to the options data front, in the options, if we see for the Nifty, we can see the resistance at 18,650 and 18,850 zone. The writers are shifting to that zones. And with the addition of 1.2 and 2.1 million shares, while on the put side, if you see 18,600 and 18,650, so 18,650 is now becoming a straddle. So this should be a key decider zone for this coming expiry. Similarly, for the Bank Nifty, if you see 44,200 and 44,500 are the strikes where the put writings are witnessed. And on the other side, on the call side, if you see 44,500 and 44,800. So 44,500 would be the key decider level for this coming expiry. Now coming to the FI stats, if you see FI yesterday added their net longs by 2,700 contracts. So now they are net long short by 61 percentage and 32,400 contracts. On the cash side, they had bought to the tune of 2,100 odd crores, 2,085 to be specific, but DI has sold to the tune of 438 odd crores. Long welters for this for yesterday, if we see there were good longs in JK Cement, RBL Bank, and SDFC Life. For short welters were witnessed in Apollo Hospital, Chambal Fertilizer, and IRCTC. And stocks that can be watch out are AB Capital, Oro Pharma, and MCX. These stocks are looking good at chance, so traders can view on for. That's it from mine. I'll hand over to Bhavesh sir for more updates. Thank you, Novodu. Yeah, good morning, team. So, starting with the result of Greenply Industries. So, Greenply Industries results, operating results were strong. Revenue increased by 11% to 469 crores, and even EBITDA margin improved by 254 basis points to 10.1%. This is mainly led by plywood segment, and now they've already set up MDF plant, and their plant has commenced on March 5, May 5. So in today's conference call, they will give guidance on FY24 and 25, and which will be the key determinant of the stock price movement here on. So far, I think stock have done reasonably well. Second, LTH. So LTH Q4 was in line with our expectation. Net sales increased by nearly 1.1x to 252 crores, supported by a robust PAR, but EBITDA was up very strong, 550% YOY to 131, almost 140 crores, with a very strong improvement in margins. So the company's schedule call is scheduled tomorrow, and post that will release a detailed note. And currently, we have a buy rating on the stock. Third, there was a call of IRCTC. So in the call, the company mentioned that the company will focus on increasing the contribution of non-convenience fees. Currently, it contributes 33% to sales, and addition of Vande Bharat trains will only drive earnings for will improve their ticketing revenue.
one train has around 1,000 passengers, which of which 90% are booked online, and each ticket gives 20 rupees 20, leading to revenue of nearly 20,000 rupees per train. So that is very strong. And currently we have a buy rating on the stock. So that's it from me. Over to you, the retail team. Thank you, sir. Few tips from my side. So first update on Sun Pharma. So the pharma major announced that there is a new drug application of teladazine injection used to cure adults with moderate and severe plaque psoriasis, which was approved by Chinese Health Authority. Next update on Mahindra and Mahindra. Company announced that Icarus Hyben has been incorporated as a wholly owned subsidiary of Mahindra Sustain, which is a subsidiary of Mahindra Holdings Limited, which is in the term of wholly owned subsidiary of the company. Next update on Coal India. So Coal India has raised the price of non-cooking coal by 8%. This is the first hike in the price of non-cooking coal in last 5 years. So increased price will be lead to incremental revenue around 27.03 billion in the remaining period of the current fiscal financial year 24. This will apply to all subsidiaries of Coal India, including NEC for regulated and non-regulated sector. Next update on NMDC. Iron ore lump and fine grades were slashed by rupees 300 and rupees 450 per ton. So now iron ore lump is rupees 3,900 per ton and fine grades is 3,560 rupees per ton. And lump ores or high grade iron ore contain 65.53% iron, while fines are inferior grade ores to 64% and less iron content. The next update on Vedanta fixing bid for India chief funding is said to be rejected. Then. Good morning, team. Adani Port reported results. The revenue was higher by 30.8% at 20,850 crores, 852 crores for full year, and profit after tax was higher by 12.4% at 5,393 crores. EPS for the full year was 24 rupees 58 paisa. The stock trades very attractively if you take the long-term commitment of the company. Almost 26% of the total sea-bound transport will be handled by Adani Port. And very important, they have a target of 500 million metric ton by 2025. And they are in line to achieve that. And their turnaround time, TAT, they call it as. The turnaround time is just 0.7 days. So it is a global benchmark. So they are very good in port management. So this is one stock which is very attractive in this group, valuation wise and the business model wise. So I think this for a long-term investor, and a high-risk investor, this stock can be looked at. SBI Card is planning to raise almost 3,000 crores by way of NCD. And we are very positive on SBI cards because they are very aggressive in acquiring clients, and because of their Rupiah credit card and debit card, they are finding application in UPI also. So many UPI transactions can now enable Rupiah card, and in Rupiah card, SBI card is a major beneficiary. Even if you take IRCTC cards. So I think this stock can give you 20 to 25% return in next 1 year. So we are very positive on SBI card. Aegis Logistic came with the results. Now results on the face of it looks very good. Revenue is higher by 86% at 8,627 crores, and profit after tax is higher by 511 crores. Profit after tax is 511 crores, higher by 32%. Full year EPS is 13 rupees 90 paisa. Even quarterly results is better. The revenue for this quarter was 2,154 crores.
higher by 2.4%. Profit after tax was 212 crores, higher by 68%. Aegis Logistics valuation wise is trading attractive. They have terminals near the port where they store gas as well as chemicals. No, and the major portion of their business comes from gas. And as India started to import a lot of gas, Aegis revenue will systematically grow. So if there is a correction, it is a good opportunity to buy this. Musgon Dog came with the results. Musgon Dog order book is almost 80,000 crores. So, but their execution is still not up to the mark. But I think, the German Chancellor is likely to visit India, where many people expect a deal between Indian government and German on the transfer of technology. If that happens, the major beneficiary will be Musgon Dog. So their revenue was higher by 36.5% at 7,827 crores. Profit after tax is 1,119 crores, which is higher by 83%. Their EPS is 55 rupees 48 paisa. The stock trades very attractively. If you look at the way they have an order book, and they can get more orders also, and they are paying a dividend of 6 rupees 86 paisa. RCF came with the results, so they have declared a dividend of 3 rupees 70 paisa. The stock trades at 5.8 times. The full year revenue is 21,451 crores, higher by 67.4%, and profit after tax is higher by 37% at 966 crores. But here normally fertilizer stock as subsidy part is very high. They trade at a discount. But nano fertilizer is something which will be a game changer. But we need to watch out for commentary. Yesterday, Mahindra Holiday was starting to move up, and many of the defense-related stock also started to move higher. In that, HAL, BDL, and Cochin Shipyard, along with Musgon Dog, got few stocks to watch out for. There is one commentary on TCPL. In the management interaction, the management said they imported a machinery which has not worked, or it has malfunctioned, due to which now we don't feel next 2 quarters the revenue will drastically move higher, because the capex is the most important thing. The valuation is very attractive, but because they have few things, and even they said mobile sales have not improved. So the packaging for mobile is something which they do. So that business also will not kickstart. So I think next 1-2 quarters of a flat growth is what people expect. That is why TCPL has corrected. But for a long-term investor, it gives a very good opportunity for somebody who has missed a TCPL packaging. Now, valuation-wise, it is looking very attractive at 120 rupees EPS. The stock trades at around 12 times after correction. So I think it gives a very good entry point. So, somebody who is looking for a long-term can buy. Royal Orchard, the result has been very good. The revenue is 263 crores for the full year, higher by 90%. Profit after tax is 49 crores, higher by 84%. The EPS for the full year is 17 rupees 50 paisa. So the stock trades at 21 times trailing EPS. And with hotel industry likely to grow, I think Royal Orchard, even Indian Hotel, Mahindra in hotel space, Lemon Tree, these are opportunities to look at. Yesterday we met the management of Kalyan Jewelers. So very interesting. They have a huge debt. So now they don't want to proceed with that debt level. So what they are trying to do is to reduce debt. They are selling their non-core asset. I think in next 2 years, 500 crores, they will reduce using that sale of assets. And even their airline business, they have written off, and they are
they have put a binding agreement. So there they will get about 130 crores. And previously it was company owned and company operated business model. Now it will be franchisee owned and company operated business model, where their margins will come down. But because they spend almost 280 crores on ad, that will give them a very good advantage. With 150 stores in India and 30 stores in Middle East, I think they will scale up their business. 14,000 crore is their top line. So I think going forward, their margins might come down, but their revenue growth will be very good. So, Kalyan Jewellers, in a corrective environment, it is a good stock to buy. It is not a stock to buy right away. Do it as a SIP on a quarterly basis. That way, it will be a better stock to buy and hold. With that, over to you, team. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी एक कॉल को हम एक बार हिंदी में कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं अडानी पोर्ट के साथ। अडानी पोर्ट के रिजल्ट्स के नंबर्स आए थे। रेवेन्यू अप थे 30.8%, जो कि 20,852 करोड़ के आसपास है। पैट में 12.14% इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और इसका जो फुल ईयर का ईपीएस है वो 24.58 पैसा है। तो ये अगर अडानी पोर्ट की जो नंबर्स देखते हैं और उनके जो बिजनेस मॉडल को देखते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। उनके लगभग 26% के सी बाउंड ट्रांसपोर्ट उनके पास है, और उनके जो आने 2025 तक का उनका 500 मिलियन मेट्रिक टन का ये टारगेट है। और उनके जो पोर्ट में जो ऑर्डर कंप्लीशन करने का जो डेज का जो टाइम है वो 0.7 डेज का है। ये ग्लोबल बेंचमार्क को ये के इनलाइन में है। तो अडानी पोर्ट कहीं ना कहीं नंबर्स को देखते हो और आगे के आने वाले सालों में जो उनका जो प्रोजेक्टेड बिजनेस मॉडल है उसको देख के लगता है कि ये काफी स्ट्रांग हो सकता है। तो जिन किसी को भी इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू लेना है तो हमें लगता है कि इसमें व्यू बनाना चाहिए। तो हम इसमें पॉजिटिव व्यू लेके चलेंगे। इसके बाद एसबीआई कार्ड के ऊपर अपडेट है। एसबीआई कार्ड 3,000 करोड़ रेज करेंगे एनसीडीए से, एनसीडी बॉन्ड से। तो ये वैसे भी हमारे एसबीआई कार्ड के ऊपर पॉजिटिव व्यू है। आईआरसीटीसी के कार्ड के लॉन्च होने के बाद में इसमें काफी उछाल देखने को मिला था। 20-25% का रिटर्न एक्सपेक्ट करें हम नेक्स्ट 1 ईयर में। तो जिस हिसाब से और रुपए का जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड में जो एडिशंस हुआ है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस में जो बढ़ोतरी देखने को मिला, तो डेफिनेटली एसबीआई कार्ड एक ऐसा स्टॉक रहेगा जिसमें आने वाले दिनों में काफी पॉजिटिव बायस और तेजी देखने को मिल सकता है। हम इसे 20 से 25% का व्यू लेके चल रहे साल भर के लिए। उसके बाद एजिस लॉजिस्टिक्स के नंबर आए थे, पॉजिटिव थे। रेवेन्यू 86% अप था 8,627 करोड़ के पास। पैट 511 करोड़ देखने को मिला, 32% ऊपर था। ईपीएस है 13.19 पैसे। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफी अच्छे थे, पॉजिटिव थे। पैट 212 करोड़ के आसपास है, 68% का ग्रोथ देखने को मिला। वैल्यूएशन के हिसाब से ये काफी स्ट्रॉन्ग है। तो हमें लगता है कि डिक्लाइंस में करेक्शंस में ये काउंटर पे किसी को जिनको लॉन्ग टर्म का व्यू लेना है वो डेफिनेटली इसको बाय करके बाय करके चल सकते हैं। बेसिकली ये जो एजिस लॉजिस्टिक है गैस और केमिकल्स को स्टोरेज करता है। तो इंडिया जिस हिसाब से इम्पोर्ट कर रहा है गैस को, तो हमें लगता है कि ये काउंटर काफी बेनिफिट रहे। तो इसमें हम पॉजिटिव व्यू लेके चलेंगे। इसके बाद एक मजगांव डॉक है। मजगांव डॉक के अगर ऑर्डर बुक्स देखते हैं तो 80,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक है। उसमें अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि यहाँ पे एक चांस है कि जर्मन के जो चांसलर है वो इंडिया को शायद विजिट करेंगे, और इंडियन गवर्नमेंट और जर्मन गवर्नमेंट के बीच में कोई टेक्नोलॉजी को लेके टाई अप हो सकती है। अगर ये होता है तो ये स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। उसका रेवेन्यू 36.5% अप था, जो कि 7,827 करोड़ के आसपास है। पैट 1,119 करोड़ देखा गया था, जो कि 83% अप है। ईपीएस है इसका 55.45 पैसे पूरे साल भर के लिए। तो ये स्टॉक भी हम पॉजिटिव के नजरिए से ही देख रहे हैं। कल हमने देखा कि होटल स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिला है, तो एमएचआरएल हमें ठीक लगता है। डिफेंस स्टॉक्स में भी अब एचईएल, बीडीएल, मजगांव डॉक पे ध्यान रख सकते हैं। हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा एक काउंटर के ऊपर।
इसके बाद रॉयल ओर्चिड के नंबर्स आए थे। रेवेन्यू आफ्टर 263 करोड़, 19%, पैट में 49 करोड़, और जो कि 84% अप था। ईपीएस भी 17.15 पैसे देखने को मिले। तो ये होटल इंडस्ट्री ओवरऑल हमारा ऐसे सेक्टर हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो हमें रॉयल ओर्चिड पे भी पॉजिटिव व्यू है। तो इसमें अगर किसी को बाइंग या शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर किसी को अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है तो वो देख सकते हैं। सो इसके बाद एक अपडेट है टीसीपीएल के साथ, मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट ने ये बताया है कि उन्होंने लेटली कुछ इंपोर्ट किया था, जो मशीनरीज जो इतने काफी चल नहीं रहे, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा उनके आने वाले 2 क्वार्टर्स में रेवेन्यूज काफी कम दिखेंगे। टीसीएल जो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग है, 120 के ईपीएस से ट्रेड कर रहा है। ईपीएस का जो बिजनेस है, जो बेसिकली मोबाइल सेल, मोबाइल के जो बॉक्सेस है उसको जो बॉक्सिंग जो करते हैं वो टीसीपीएल करता है। मोबाइल के सेल्स में शायद पिछले काफी दिनों में इतने ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। तो शायद और जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने बताया कि जो कुछ उनके जो मशीनरीज में मैन्युफैक्चरिंग जो हुए हैं, उसके चलते उनके अगले 2 क्वार्टर्स में शायद उतने सेल्स और रेवेन्यूज देखने नहीं मिले, तो शायद थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। जिस तरह से वैल्यूएशन काफी पॉजिटिव है, तो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। तो जिनको भी लॉन्ग टर्म का व्यू लेना चाहते हैं वो इसको डिक्लाइन पे बाय कर सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर एक अपडेट था हमारा। हमने मैनेजमेंट के साथ एक मैनेजमेंट मीट हुआ था, जिसमें कल्याण ज्वेलर्स ने उनके बिजनेस मॉडल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो उनके जो डेप्थ है वो शायद कम करने का सोच रहे हैं। अगले 2 साल में 500 करोड़ तक का उनका एसेट सेल करके, या फिर वो शायद उनका डेप्थ कम कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस को भी वो उसमें भी शायद वो वाइंड अप करेंगे, तो फिर वो भी वहां से भी उनका इन्फ्लोस आना चालू होगा। मोस्टली ये इनका जो बिजनेस है वो साउथ में है, तो वो ये नॉर्मली अपने खुद की कंपनी ओन ब्रांचेस चलाते थे, बट जबकि अभी वो सोच रहे कि फ्रेंचाइजी मॉडल में ही भी जाएंगे। 150 के करीब उनकी ब्रांच उनके शॉप्स है इंडिया में, और 30 शॉप्स है करीब करीब मिडिल ईस्ट में। तो हमें लगता है कि ये जिस हिसाब से अगले 1-2 साल में जिस हिसाब से वो डेप्थ रिड्यूस करेंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी स्ट्रॉन्ग बेट रहेगा। तो कल्याण ज्वेलर्स पे भी हमारा पॉजिटिव व्यू रहेगा। अगला अपडेट है एलटीएच के ऊपर। इस पे हम इसके रिजल्ट्स आए थे, इनलाइन थे हमारे एस्टिमेट से। नेट सेल्स इंक्रीज हुआ है 1.1x ईयर ऑन ईयर, 2526 मिलियन के नंबर्स देखे गए थे। तो एबिटा भी में भी ऊपर देखा गया था 550 परसेंटेज ईयर ऑन ईयर, जो कि 1399 मिलियन है। तो नेट प्रॉफिट 441 मिलियन देखने को मिला था है, और जबकि पिछले क्वार्टर में पिछले Q4 FY22 में जो लॉस के 247 के नंबर थे, उसके सामने 441 के प्रॉफिट के नंबर आए थे। हमारा बाय रेटिंग है काउंटर के ऊपर, तो इसमें पॉजिटिव रहेगा। ग्रीन पाई के ऊपर भी नंबर्स आए थे। ग्रीन पाई के जो ऑपरेटिंग रिजल्ट है वो हमारे एस्टिमेट्स के ऊपर रहता है। रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला 11.4% ईयर ऑन ईयर एंड 9.6% क्वार्टर एंड क्वार्टर। एबिटा के एबिटा के जो मार्जिन है मार्जिनली थोड़े से कम है, 3 बेसिस पॉइंट, बट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने का 254 बेसिस पॉइंट। तो कंपनी के जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, और जो जिस हिसाब से वो अभी ओवरऑल ओवरऑल अगर देखा जाता है तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज है। हम पॉजिटिव व्यू लेके चलेंगे इसमें, तो हमारा पॉजिटिव बायस रहेगा। आईआरसीटीसी के साथ भी हमारा एक मैनेजमेंट मीटिंग था, जहाँ पे कंपनी ने बताया है कि उनका जो रेवेन्यू आता है नॉन कन्वेंशनल फी से, जहाँ जहाँ तक 33% का टिकटिंग आता है, तो वो शायद वो अभी इंक्रीज करने पर देख रहे हैं। तो उनकी जो वंदे भारत का जो ट्रेन है उसमें भी टिकटिंग के लिए वो जहाँ पे नियरली एक ट्रेन में उनके 1000 पैसेंजर्स जाते हैं, जहाँ से उनके 90% ऑनलाइन बुकिंग से टिकट के रेवेन्यूज आते हैं, जो कि हर एक टिकट के पीछे 20 रुपए का उनका रेवेन्यू है। तो उनके आने वाले और वो बता रहे हैं कि उनके कैटरिंग बिजनेस में भी वो शायद आगे का जो प्रोजेक्शन है काफी बढ़ाने वाले हैं। तो वो नियरली 13%
CAGR का जो ग्रोथ बताया गया 13% से 24% एंड 19% रिस्पेक्टिवली वो बता रहे हैं, इस पे हमारा बाय रेटिंग है, तो हम पॉजिटिव व्यू लेके चलेंगे।